Assalamu alaikum, I am Dr. Manur and today the topic of our lecture is absorption of drugs. At the end of the lecture, you should be able to define absorption, give factors affecting absorption, concept of pH and pKa, and define bioavailability. Absorption is the process by which a drug is transported or transferred from its site of administration into the blood circulation. The rate and extent of absorption, that is, fraction of administered dose, can influence both the duration of action as well as the effectiveness of the drug. Let's discuss factors affecting drug absorption. These factors can be divided into drug-related and body-related. Drug-related factors include lipid and water solubility, degree of ionization, concentration of drug, and pharmaceutical factors such as dosage form, formulation, molecular size, disintegration time, and dissolution rate. Body-related factors include route of administration, pH of absorbing surfaces, surface area of absorption, thickness of path of diffusion, and vascularity of absorbing surface. An important thing to remember is that drugs in uncharged form are more lipid soluble, whereas drugs in charged form are more water soluble. Lipid solubility is a measure of how readily a drug enters lipid medium from an aqueous medium. A drug with high lipid aqueous partition coefficient will enter lipid medium more readily than a drug with low lipid aqueous partition coefficient. Lipid solubility of a molecule is inversely proportional to its charge, thus very hydrophilic drugs are unable to cross lipid-rich cell membranes. The solubility of a drug in water is often a function of electrostatic charge of the molecule, because water molecules are attracted to charged drug molecules. Drugs that are extremely hydrophobic are totally insoluble in the aqueous body fluids but are soluble in lipids. Thus, for a drug to be readily absorbed, it must be largely hydrophobic, that is, lipophilic, yet have some solubility in aqueous solution. Now let's discuss influence of pH and pKa on the absorption of drugs. Most drugs are weak electrolytes, as we cannot ingest strong acids and strong alkalis. The degree of ionization is mainly dependent on pH. So, the absorption of a drug from the GIT or passage of a drug across the cell membrane depends on degree of ionization, which itself depends on the pH of the medium and pKa of the drug. The drug in the uncharged, that is unionized form, is lipid soluble and hence is easily absorbed. The rule that you should remember is that acidic drugs are absorbed in acidic medium, whereas basic drugs are absorbed in alkaline medium. Now let's discuss the concept of Henderson-Hasselbalch equation, which is pH equals to pKa plus log with non-protonated divided by protonated form. The Ka is the dissociation constant, whereas pKa is numerically equal to the pH at which the drug is 50% ionized. As you all know the concept of pH, आप लोगों को पता है कि 7 को हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं. From 0 to 7 एसिडिक pH होती है और from 7 onwards जितना ऊपर जाएगा वो अल्कलाइन मीडियम या pH होता जाएगा. तो pKa एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक ड्रग 50% आयोनाइज्ड और 50% अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती है, आइडियली एट द pH. इधर जो बात समझने वाली है वो है कि अगर एक ड्रग का pKa और मीडियम की pH मैच कर जाए, इक्वल हो, तो 50% ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी और 50% अनआयोनाइज्ड.
For example, if an acidic drug of pKa 3.5, for example aspirin, is put in the medium with pH of 3.5, 50% of the drug would be in the ionized form. For a weak acid, the equation is given here, where A is the unprotonated form and HA is the protonated form. If the drug is 50% ionized, the equation becomes pH equals to pKa plus log 1. Since the log of 1 is 0, the pH becomes equal to pKa. Another important thing is that if the pH is changed by 1 unit, that is increased or decreased, then degree of ionization changes by 10-fold, as it is a log. Similarly, if pH is changed by 2 to 3 units, degree of ionization changes by 100 to 1000 folds respectively. A very important concept that you should remember is that acidic drugs are absorbed in acidic medium, whereas basic drugs are absorbed in basic or alkaline medium. आप लोगों ने याद रखना है कि एसिडिक ड्रग्स एसिडिक, जबकि बेसिक ड्रग्स बेसिक मीडियम में ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी. मतलब कोई भी ड्रग तब ज़्यादा एब्जॉर्बेबल होगी अगर जो मीडियम है उसकी पीएच उससे सिमिलर हो. अब हम देखते हैं कि एस्पिरिन की एग्जांपल ली जिसका pKa 3.5 है. आप लोगों को पता होना चाहिए pKa ड्रग का चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, स्टैंडर्ड होता है. सिर्फ पीएच चेंज की जा सकती है मीडियम की. अगर पीएच सिमिलर है, जैसे एस्पिरिन क्योंकि pKa 3.5 है, हमने बात की कि अगर pH 3.5 होगी मीडियम की तो 50% ड्रग यानी कि 50% एस्पिरिन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी और 50% अनआयोनाइज्ड फॉर्म में. जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, वो इफेक्ट ला रही है. अब अगर हम 1 यूनिट का चेंज डालेंगे पीएच में, यानी कि हमने मीडियम की पीएच को मोर एसिडिक बना दिया है फ्रॉम 3.5 टू 2.5, 90% ऑफ द ड्रग विल बिकम अनआयोनाइज्ड, यानी कि उसका चार्ज और ज़्यादा ख़त्म होता जा रहा है, वो और ज़्यादा एब्जॉर्बेबल होती जा रही है, ज़्यादा सोलेबल बन जाएगी. यही वजह है कि जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो स्टमक में ज़्यादा एब्जॉर्बेबल होती हैं, जबकि बेसिक ड्रग्स इंटेस्टाइन में ज़्यादा एब्जॉर्बेबल होती हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन की जो पीएच है वो अल्कलाइन है. सो इफ़ अ बेसिक ड्रग with a pKa 7 is put in a medium of pH 8, then about 90% would be in the unionized form. If this drug is put in a medium of pH 9, about 99% would be in the unionized form. That is, the drug is becoming more and more soluble. Weakly basic drugs, for example, atropine, ephedrine, chloroquine, ionize more at acidic pH. Therefore, they become less absorbable. Bases, for example, atropine with pKa 10 are largely ionized at basic pH and are absorbed only when they reach the intestine. तो अगर आप एक एसिडिक ड्रग को बेसिक ड्रग में डालेंगे तो ड्रग चार्ज फॉर्म में चली जाएगी और वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी, ठीक है. Now this concept will be applied here, that is ion trapping. What is ion trapping? हमने बात की कि जो अनचार्ज फॉर्म है वो एब्जॉर्ब हो सकती है. अब एस्पिरिन क्योंकि हमने एसिडिक ड्रग ली और वो स्टमक में एसिडिक मीडियम की वजह से एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, तो वो सेल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी. जब उसने इजीली क्रॉस तो कर लिया, लेकिन सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलरली pH इज़ 7. अब क्या हुआ है कि वो एक एसिडिक मीडियम से मोर बेसिक मीडियम में गई है. एक ड्रास्टिक चेंज आया है उसके मीडियम की pH में, तो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. तो वो पहले अनचार्ज फॉर्म में था तो इसीलिए उसने क्रॉस कर लिया मेम्ब्रेन्स को, लेकिन अंदर जाने के बाद सेल के वो चार्ज फॉर्म में चला जाएगा. क्योंकि अब वो चार्ज हो गया है
तो अब वो वापस सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकेगा और इसकी वजह से वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगा और एक्यूमुलेशन की वजह से एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं. So this is ion trapping. So the acidic drugs in the unionized form enter the gastric mucosal cells and are converted to the ionized form within the cells with pH 7. So they become trapped. Then they slowly pass into the extracellular fluid. Other factors involved in the absorption of drugs include drug formulations, the particle size, crystal polymorphism, and presence of dilutants such as binders and dispersing agents may influence the ease of dissolution and thus alter the rate of absorption. जितनी ज़्यादा बाइंडर्स की बाइंडिंग कैपेबिलिटी होगी उतने ही देर से एक ड्रग डिसइंटीग्रेट होगी और डिस्पर्स होगी. डोजेज फॉर्म्स डिपेंड करती है ऑन द state of drug, that is solid or liquid. So the drugs given in solid form must dissolve in the aqueous biophase before they are absorbed. The aqueous solutions are rapidly absorbed, then suspension and colloidal preparation. Also, oily solutions are slowly absorbed. Therefore, procaine or benzathine is added to penicillin and protamine is added to insulin to form suspensions, repository or depot preparation that causes slow absorption of drugs. और हम ये इसलिए करते हैं ताकि ड्रग स्लोली एब्जॉर्ब होती रहे और देर तक अपना इफेक्ट दे. Concentration of the drug, we should know that passive diffusion depends on concentration gradient. So, the drugs which are given in concentrated solutions are absorbed faster than the diluted solutions. Surface area. The larger the surface area of absorbing structure, the more drug is absorbed, such as in intestine. As intestines have the largest surface area, the more drug particles will be absorbed through intestinal walls. Also, the thickness of diffusion path influences the absorption of drug, as the mucosa of stomach is thick and covered by a thick mucus core, and hence the flux of diffusion is slower, whereas in intestine the thickness of diffusion path is less than that of stomach, so more drug will be able to absorb. Motility of the gut. Increased peristalsis seen in diarrhea reduces absorption. Metoclopramide accelerates gastric emptying and increases rate of absorption, whereas antimuscarinic drugs and opioids delay emptying of stomach and reduce drug absorption. सिंपल चीज़ जो आपने याद रखनी है इज़ दैट कि जितना ज़्यादा जीआईटी की मोटिलिटी होगी उतनी तेज़ी से ड्रग बॉडी से रिमूव होती जाएगी. जितनी ज़्यादा ड्रग को टाइम मिलेगा बॉडी में जीआईटी में उतनी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होगी. तो अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले हो जाए तो ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग फास्ट हो जाए तो ड्रग इतनी एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी बल्कि ज़्यादा निकलेगी. तो इसलिए ड्रग्स जो हैं वो डिफरेंट इफ़ेक्ट रखती हैं ऑन द मोटिलिटी ऑफ जीआईटी. उनकी इंटरेक्शन हो सकती है डिफरेंट ड्रग की एब्जॉर्प्शन से. Now food. Similarly, presence of food in GIT dilutes the drug and markedly delays absorption of most drugs. Moreover, the drug is more slowly absorbed because its progress to the small intestine is delayed. Blood flow. Absorption is increased with increased blood flow. So if you understand this concept, the massage or application of heat at the site of injection will increase the blood flow, therefore increasing the absorption of drug. Whereas if there is vasoconstriction, the drug will be less absorbable. For example, due to shock, vasoconstriction occurs and hence the absorption is retarded. Similarly, soldiers wounded in battlefield are in the state of shock as they are injected morphine, but it is not absorbed due to vasoconstriction.
Splanchnic blood flow. Several drugs, for example propranolol, reaches a higher plasma concentration if they are taken after meal, probably because food increases splanchnic blood flow. Conversely, splanchnic blood flow is greatly reduced in hypovolemic states, with a resultant slowing of drug absorption. तो जितना आप एक जगह का ब्लड फ्लो इंक्रीज करेंगे, वेजोडाइलेशन करेंगे, उस जगह उतनी ज़्यादा ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी और वेजोकंस्ट्रिक्शन से ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। ड्रग इंट्रैक्शंस, हमने पहले भी बात की कि कुछ ड्रग्स due to their presence in GIT or their effect on GIT will consequently affect the absorption of drug. For example, presence of other drugs may interfere with absorption of some drugs, including calcium, which is present in milk, and antacids, forms insoluble complexes with tetracyclines. Tetracyclines also form complexes with iron preparations. Liquid paraffin interferes with absorption of fat-soluble vitamins. Bile acid binding resins such as cholestyramine bind several drugs, for example, warfarin and thyroxine. You will study these interactions further when you will study these particular drugs. Chemical instability. You should know that penicillin G is unstable in gastric pH and insulin is destroyed by peptidases. So, GIT की pH भी different drugs के ऊपर effect रखती है. The factors related to GIT which affect absorption are given here, which include presence of food in the stomach, the lipid solubility, the degree of ionization, the pH of the medium, concentration of the drug, absorbing surfaces, thickness of diffusion path, gastric emptying time, splanchnic blood flow, presence of other drugs, GIT motility, metabolism and chemical instability, drug formulations, GIT diseases, and P-glycoproteins. Now let's discuss bioavailability. What is bioavailability? It is a fraction or percentage of administered dose of a drug which reaches into systemic circulation in unchanged form when given through any route. This is known as bioavailability. वो फ्रैक्शन या परसेंटेज मेडिसिन की जो हमने एडमिनिस्टर की किसी भी रूट से, लेकिन वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अनचेंज फॉर्म में पहुंची. अनचेंज फॉर्म का मतलब जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, उसको कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी. एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पास इफेक्ट का जो आप अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. हम मेडिसिन देते हैं थ्रू डिफरेंट रूट्स. आप लोगों ने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े. आपने देखा कि जब हम ओरली ड्रग देते हैं तो ऑब्वियसली उसने जीआईटी से एब्जॉर्ब होने और थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन वो पहले लिवर में जाएगी. लिवर में मेटाबॉलिज्म होगा और वो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो बहुत सारी ड्रग चेंज हो जाएगी. तो जो फिर अल्टीमेटली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी वो कम होगी अनचेंज फॉर्म में, क्योंकि ज़्यादातर चेंज फॉर्म में होगी मेटाबोलाइट्स बन के, तो उतना ही इफ़ेक्ट कम आएगा. तो ओरली जब हम ड्रग्स देते हैं तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती, जबकि अगर हम ड्रग्स पारेंटली देंगे, फॉर एग्जांपल इंट्रावीनसली या इंट्रामस्कुलरली, तो 100% ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज फॉर्म में पहुंचेगी. यानी कि 100% ड्रग अवेलेबल है अपना इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि उनका ब्रेकडाउन अभी नहीं हुआ. So bioavailability also indicates the rate of absorption of drug at which it reaches into general circulation.
It can be calculated by comparing the plasma levels of drug given through any particularly route with that of intravenous route, because bioavailability through intravenous route is 100%. The formula is given here. Bioavailability equals to area under curve of oral administration divided by area under curve when given through IV route multiplied by 100. As you can see here, that when the drugs are given orally, they will first absorb into portal circulation and then into systemic circulation. So when they will pass through portal circulation, they will get metabolized and then they will reach systemic circulation in varying amounts of unchanged form. When given through intravenous and intramuscular route, 100% of drug will be absorbed into systemic circulation. When given through rectal route, almost 50% will go directly into systemic circulation, whereas 50% will go into portal circulation first and then will move into systemic circulation. When given through sublingual and buccal route, the drugs will directly go into systemic circulation, whereas when given through inhalational route, drugs will mainly remain locally in the lung tissue and a very little amount will go into systemic circulation. In this slide, a graph has been shown with time on the x-axis and plasma concentration on the y-axis. This graph represents the area under curve through which we can calculate bioavailability of a drug. आप इसमें दो पीक्स देख सकते हैं, एक जो कि एरिया है अंडर कर्व जिसने मैक्सिमम इफेक्ट अचीव किया है वो है थ्रू इंट्रावीनस रूट, जिसका मतलब है कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100%, जबकि जब हमने ओरल ड्रग दी तो उसका एरिया अंडर कर्व आपको दिखाता है कि उसकी पीक ने मैक्सिमम इफेक्ट अचीव नहीं किया, सब मैक्सिमम था, जिसका मतलब है कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी लेस देन 100% है. Assignment questions are given in this slide. Question number 1 is, what are the factors affecting absorption of drugs? Question number 2 is, define bioavailability. Thank you. If you have any questions, you can ask.